Welcome students in lecture number 31 of statistics. In this lecture we are going to discuss the sampling distribution of difference between two sample means. So let me summarize what we are going to do in this video lecture. First of all, we try to find how to construct such distribution. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. Second, what is the shape of the distribution so obtained. इस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी. Third is numerical problems. Based on this distribution. Okay. तो सबसे पहले हम देखेंगे how to construct such distribution. So let me write here construction of sampling distribution of difference between two sample means. So let we have two population. One is population number 1 having mean equals to mu1, variance is equal to sigma 1 square, and population number 2 having mean equals to mu2, variance is equal to sigma 2 square. Suppose we have drawn a sample of size n1 from this population, and x1 bar is the mean of the sample, right? And here we have taken a sample of size n2 and we calculate x2 bar, which is the mean of the sample which is drawn from the second population. And remember that both of these samples are independent of each other. Okay. Then we find the difference between sample means of these two samples. That is, find the difference, find the difference between
sample means that is x1 bar minus x2 bar. Similarly, we can have collection of differences between sample means अगर हमने एक एक सैंपल ड्रॉ किया है, you can draw another sample from this population of size n1 say. You can draw another sample from this population and then take the difference. You keep on finding drawing the samples and finding the differences between the two sample means. So in this way, we will have a collection of difference between two sample means. Okay. So similarly, we can have collection of differences between sample means for other randomly drawn samples from both population. From both population. Okay. This collection, इस collection को of x1 cap minus x2 cap, one for each sample, one for each two samples pair. Each, you can remove two here. You can write one for each sample pair is called sampling distribution of difference between two sample means. Okay. Now we can state a theorem which is an extension of central limit theorem, which can be applied on this sampling distribution of difference between two sample means, which says that we can state a theorem
if independent samples of size n1 and n2 are drawn at random from two populations with mean mu1 and mu2 and variances sigma 1 square and sigma 2 square respectively, then the sampling distribution of the difference of sample means x1 cap minus x2 cap is approximately normally distributed with mean and variance given by mean of sampling distribution of difference between sample means is denoted by mu x1 bar minus x2 bar, and this is equal to mu x1 bar minus mu x2 bar. तो ये mean है sampling distribution of sample means का, which are coming from the first population. This is the mean of sampling distribution of sample means which are drawn from second population. From central limit theorem, we know that the mean of such distribution is equal to population mean from which they are coming from. So mu1, this is equal to mu1 and this is equal to mu2. So mean of the difference between mean of the distribution of the difference between sample means is equal to the difference between their population means. And variance is given by the sum of the variances of the sampling distribution of sample means from the first population and sampling distribution of the sampling distribution of the sample means or where the samples are drawn from the second population. This is equal to sigma 1 square upon n1. This is equal to sigma 2 square upon n2. So the variance of the different sampling distribution of difference between two sample means is given by sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. So here we are assuming that the sampling distribution of sample means, that is ये इनसे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इन मीन से वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. मीन्स वी आर supposing that n1 is
greater than 30 and n2 is also greater than or equal to 30. तो अगर n1 और n2 का साइज 30 या उससे ज्यादा है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. लेकिन अगर दोनों पॉपुलेशन नॉर्मल हैं तो the shape of the sampling distribution of difference between two sample means is normal no matter what the sample size is. ये मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर पॉपुलेशन जहां से हमने सैम्पलिंग की है अगर उसके बारे में हमें पता है कि वो नॉर्मल है तो सैंपल साइज हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप हमेशा नॉर्मल ही रहेगी. लेकिन अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तो हमें सैंपल साइज कम से कम 30 रखना पड़ेगा टू बी ensure that the sampling distribution of the sample means or the sampling distribution of sample proportion or the sampling distribution of the difference between two sample means is approximately normal in shape. Okay. तो ये मीन और वेरिएंस हो गया इस डिस्ट्रीब्यूशन का और ये एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम है फॉर डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स के लिए. तो z की वैल्यू क्या होगी हेंस z इज इक्वल टू x1 कैप माइनस x2 कैप. ये तो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है जो हम कंसीडर कर रहे हैं. इसका डिफरेंस हम लेंगे mu1 minus mu2 से which is the mean of this distribution divided by standard deviation of this distribution that is sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. This is approximately a standard normal variable. Provided n1 is greater than or equal to 30 and 2 is greater than or equal to 30. Okay. तो एक एग्जाम्पल करते हैं इसको समझने के लिए. Let me state the problem. Two independent experiments are run in which two different types of paints are compared. Eighteen specimens are painted using type A and drying time in hours is recorded for each.
the same is done with type B. The population standard deviation are both known to be equal to 1. Assuming that mean drying time is equal for the two types of paint, find probability XA cap minus XB cap is greater than 1, where XA cap and XB cap are average drying times for samples of size NA is equal to and B is equal to 18. क्वेश्चन फिर से समझते हैं क्या है. Two independent experiments are run in which two different types of paints are compared. दो पेंट्स को कंपेयर किया गया है, उसके लिए दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं. पहले एक्सपेरिमेंट में 18 स्पेसिमेन को पेंट किया गया टाइप ए तरह के पेंट से, और जो उसका सूखने का टाइम था घंटों में वो रिकॉर्ड कर लिया गया 18 स्पेसिमेंस के लिए. The same is done with type B. Population standard deviations are both known to be equal to 1. Assuming that mean drying time is equal for the two types of paints, मतलब दोनों populations का mean same है और standard deviation भी same है. We have to find that the difference की जो average ड्राइंग टाइम है पेंट ए का, वो पेंट बी के ड्राइंग टाइम से 1 घंटा ज्यादा है. ठीक है, एक्स ए माइनस एक्स बी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है. इसका मतलब यही तो हुआ. वेयर एक्स ए बार एंड एक्स बी बार आर एवरेज ड्राइंग टाइम्स फॉर सैंपल्स ऑफ साइज n1 and a is equal to and b is equal to 18. तो हमें दो तरह की पॉपुलेशंस गिवन है जिनका मीन इक्वल है और वेरिएंस दोनों की 1 है. सैंपल साइज 18 है दोनों के लिए. तो सैंपल साइज क्योंकि लेस देन 30 है, सो वी एज्यूम दैट
the population that both both population are normally distributed. So sampling distribution of x a cap minus x b cap is approximately normally distributed तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने ड्रॉ किया है. इसका मीन जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू एक्स ए कैप माइनस एक्स बी कैप से, ये किसके बराबर होगा? म्यू एक्स ए कैप माइनस एक्स बी कैप इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2. क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों पॉपुलेशंस का मीन सेम है तो ये 0 हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन is equal to square root sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. So this comes out to be 1 upon 18 plus 1 upon 18.
Let me state the problem first. Mm, The television picture tube of manufacturer A have a mean lifetime of 6.5 years and standard deviation of 0.9 year, while those of manufacturer B have a mean lifetime of 6 years and standard deviation of 0.8 years. What is the probability that a random sample of 36 tubes from manufacturer A will have a mean lifetime that is at least 1 year more than the mean lifetime of a sample of 49 tubes from manufacturer B.
Let me read the question once again. The television pictures tube of manufacturer A have a mean lifetime of 6.5 years and a standard deviation of 0.9 year. टेलीविजन ट्यूब की पिक्चर्स के दो मैन्युफैक्चरर हैं, एक मैन्युफैक्चरर ए है जो ट्यूब्स बनाता है और दूसरा मैन्युफैक्चरर बी है। जो मैन्युफैक्चरर ए जो ट्यूब्स बनाता है उनका एवरेज लाइफ टाइम मतलब वो 6.5 ईयर्स तक चलती हैं ऑन एन एवरेज, सही रहती हैं विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.9 ईयर्स। और जो मैन्युफैक्चरर बी बनाता है उन ट्यूब्स का मीन लाइफ टाइम 6 ईयर्स होता है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.8 ईयर्स। ये पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, किसी सैंपल के बारे में बात नहीं हो रही है अभी। What is the probability that a random sample of 36 tubes, अगर हम मैन्युफैक्चरर ए से 36 ट्यूब का एक सैंपल लें तो इनकी ट्यूब्स का सैंपल का जो मीन लाइफ टाइम है वो कम से कम 1 ईयर ज्यादा होगा मीन लाइफ टाइम ऑफ सैंपल्स ऑफ 49 ट्यूब्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर बी से। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमें क्या क्या गिवन है ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं। पॉपुलेशन नंबर 1 के लिए हमें μ1 है given 6.5 years and sigma 1 is given to us as 0.9 years। sigma 1 का नोटेशन ऐसा होना चाहिए 0.9 years और सैंपल साइज है 36 ट्यूब्स का। पॉपुलेशन नंबर 2 के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है मीन 6 years, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8 years, सैंपल साइज 49। क्योंकि दोनों n1 और n2 की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स का वो नॉर्मल होगा शेप में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंस n1 is greater than or equal to 30, n2 is greater than or equal to 30, so sampling distribution of x a cap minus x b cap, ए बी ले लेते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर ए और बी की बात हो रही है, is approximately normally distributed। Okay, and mean of this distribution will be, इसका मीन क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा 6.5 minus 6, 0.5 years, and standard deviation is sigma x a cap minus x b cap is the square root of sigma 1 square upon n1, sigma 2 square upon n2. This is equal to square root of 0.81 divided by 36 plus 0.64 divided by 49. This is equal to 0.189 after solving। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स ए कैप माइनस एक्स बी कैप इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ए मैन्युफैक्चरर ए का जो एवरेज टाइम है ट्यूब्स का वो मैन्युफैक्चरर बी के एवरेज टाइम से 1 घंटा ज्यादा है, 1 ईयर, सॉरी
It is not hours, it is years. It is more than 1 year. So we convert this into Z by subtracting this variable, subtracting mu1 minus mu2 from this variable and dividing it by standard deviation of this distribution greater than 1 minus mean का डिफरेंस 0.5 आया था और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये हमने फाइंड की है यहाँ पर 0.189. So this comes out to be equal to probability Z greater than, ये आएगी वैल्यू 0.5 divided by 0.189, 2.64. So we look, because 2.64 is greater than 0, so this area is equal to 0.5 minus the area between 0 and 2.64. So we look in the table for 2.64, that comes out to be 0.4959. So after subtracting we get 0.004. That is the answer. तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, so that you can get the notification about new videos on this subject. Thank you very much.